with yes. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. So welcome to all of you. So today we're looking at almost completing chapter 8. Name of the chapter is Attaining the Supreme, Bhagavad Prapti. So till now we have learned how Krishna, अब तक कृष्णा से हमने सुना how to achieve his eternal abode, and in other words how to achieve him. कैसे हम भगवत प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं. We also learned in summary about the material world and material life. भौतिक जगत और भौतिक जीवन के बारे में हमने सुना भगवान के श्री मुख से. So if we have to summarize material life in one sentence, we can say, even if we fare well in material life, we will still have to one day say farewell to material life. तो चाहे कितना भी अच्छा जिंदगी हम जिए भौतिक जगत में, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा. कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है. बहुत कहावत हमने सुन लिया. लॉट ऑफ पीपल टेल ये स्मशान वैराग्य जब आता है, जब कोई घर में चल बसते हैं तो कुछ दिनों के लिए सब लोग वैरागी बन जाते हैं. So everybody becomes a renunciant for a few days. Talks like हाँ अंत में सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा. Yes, one day we'll have to leave everything and go. But actually it's a hardcore fact that people don't really think hard and deep. तो इस जो वैराग्य की जो बातें वो करते हैं उसमें कितना खटु सत्य है वो कभी उसका विश्लेषण नहीं करते हैं. So today we will try to complete this chapter. In case we are not able to, we are left with one shloka, not an issue. We will do it in the next session. So today, just recapping shloka number 24, the two ways of giving up material life or giving up life. So these are conditions that lead to one way of or one destination. And in the next shloka, we will come to know about conditions that leads to a different destination. तो इस श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे कंडीशंस जिससे हमें एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मिलता है, जो भी इस समय में अपना प्राण को त्यागेगा. और अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कैसे कुछ और कंडीशंस में उनका गति कुछ और होता है. अग्निर्ज्योतिर अहश्लुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. So what is the meaning of this shloka? So this is giving conditions of how passing away in these conditions a person will not come back to the material world. He will not come back into the material life. What are the conditions? Well, let's read the translation. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Those who know the Supreme Brahman, Brahmavido, जो ब्रह्मन को जानते हैं, pass away from the world during the influence of तत्र प्रयात गच्छन्ति. So ऐसे लोग ब्रह्मविदो, ऐसे लोग
अपने प्राण को ऐसे समय पे त्यागते हैं. व्हाट इज दैट? द इन्फ्लुएंस ऑफ फेरी गॉड, अग्निर, अग्नि के समक्ष, इन द लाइट, ज्योतिर, अह shukla, at an auspicious moment during the fortnight of the moon Shuklaha, where the moon is bright, and the 6 months when the sun travels in the north. Shanmasa Uttarayanam, उत्तरायण दिशा में जब सूर्य का चलन प्रारंभ होता है उस समय से 6 महीने, तो संक्रांति के बाद, संक्रांति से लेके, तो भीष्म पितामह मार्गशीर्ष मास में उनको अर्जुना ने शरशय्या में सुला दिया था रणभूमि में. द महाभारत वॉर, Bhishma was made to sleep on a bed of arrows in the Kurukshetra battlefield. But since Bhishma had the vow, had the boon of Ichha Marana, he could give up his life anytime. He tried to hold on to his life. He wanted to give up his life when the Uttarayana began. So till that point of time, he stayed on the battlefield. Krishna made arrangements for his water and sustenance for that particular point of time. So what are we studying here? When fire, light, day, moon are mentioned, जब ये conditions mention किया गया है, it is to be understood that over all of them, there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. जब आत्मा का प्रयाण, जब इस देह से कहीं और जाना है, तो ये सब देख रेख कौन करते हैं? देवता. All the demigods, they are assigned different duties and they take care of different responsibilities in the journey of the soul. At the time of death, the jiva sets forth on the path of a new life. तो मरण के बाद उनका अगला जन्म सुनिश्चित हो चुका है, उनका अगला देह सुनिश्चित हो गया है, और उस दिशा में वो आत्मा जा रहा है. If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, जैसे कि भीष्मा by arrangement, accidentally बिना जानकारी के इस conditions में किसी ने प्राण त्याग दिया, it is possible for him to attain the impersonal ब्रह्म ज्योति. तो ऐसे करने से ब्रह्म ज्योति का प्राप्त होगा. ब्रह्म विदो जनाः, तो गच्छन्ति ब्रह्म, so they get into Brahma Jyoti. Mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. तो सिद्धि पुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, तो वो अपना योग अभ्यास से अपना देह का त्याग कौन से समय में करना है वो उसका नियंत्रण कर सकते हैं. Others who have no control, if by accident they live in an auspicious moment, तो क्या होगा? अगर कोई शुभ मौके पे अपना प्राण त्यागेगा, then he will not return to the cycle of birth and death. वो भी जीवन मरण के इस चक्र में नहीं पड़ेगा. मतलब आग में जानबूझ के हाथ डालेंगे, बिना जाने हाथ डालेंगे, जलना तो है ही. Similarly, anything auspicious done, including death, whether knowingly or unknowingly it happens, then the benefits will be definitely given. Similarly, Hare Krishna Mahamantra, when we chant, we transcend all these conditions. And whether one knows, doesn't know, whether one accepts, doesn't accept, मानता है, नहीं मानता है, जानता है, नहीं जानता है, हरे कृष्णा मंत्रा का वो उच्चारण करेगा, उनका उद्धार 100% होगा. If not, then every possibility is there that they will return. और इस conditions में वो अपना देह को त्यागेंगे नहीं, तो बहुत chances है कि वो वापस इस भौतिक जगत में आएंगे.
However, for the pure devotee in Krishna consciousness, अच्छा तो आप सब अब चिंतित होने लगे, तो अपना टाइम को फिर चूज करना पड़ेगा. We don't have to worry about that. Those who are in Krishna consciousness, there is no fear of returning for a pure devotee. Of course, ये बात तो शुद्ध भक्त के लिए बोला गया है. तो फिर प्रभु जी क्या हमारे लिए कोई चांस है नहीं? Of course, there is a chance when we travel the right path. All the siddhis that happen in our life is not going to be because of our own achievements. हमारे कारण कुछ भी नहीं होगा. जो भी होगा हमारे जीवन में, मरण में, गुरु का जो प्रबंध होता है उसके हिसाब से ही होगा. ऐसे we should be surrendered to Guru. He knows when to do what to adjust, what not to adjust. He knows, and he will drag us to the right place. So whether he leaves the body at an auspicious moment, inauspicious moment, accident, arrangement, कृष्ण भक्त के लिए ये सब सोचने की जरूरत है ही नहीं. जब भगवान बुला लेंगे खुशी खुशी जाना है. जब तक भगवान यहाँ पे रखेंगे खुशी खुशी रहना है. Easier said than done. I know a lot of issues and problems in the material world. However, we can only try, and the best try can happen in Krishna consciousness. Krishna pragna, कृष्ण भावनामृत स्थिति में ही ये हो सकता है. उसका अभ्यास करना अनिवार्य है. अदरवाइज लोकोयम कर्म बंधना, हम इस लोक में कर्म में बंध जाएंगे और पुनः पुनः we'll have to come back. So in the next shloka, as I said, conditions where a person has to come back or will attain an alternate heavenly planet is mentioned here. So what is that? Dhumo ratristata Krishnaha षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते. तो निवर्तते comes back, वापस आएगा. प्राप्य निवर्तते, he will certainly come back. ये योगी वापस तो आएगा इस कंडीशंस में अगर वो प्राण को त्यागेगा. So these are the dangers of trying to acquire siddhis, because after acquiring everything, if the calculation is wrong, and if at an opportune moment the yogi cannot give up his body, all his knowledge is gone. Means it is down the drain. मतलब वो वेस्ट हो गया, क्योंकि जानता था कि इस समय में प्राण त्यागना है लेकिन नहीं कर पाया. So for a Krishna devotee ये सब मायने ही नहीं रखता है. So what is the meaning of this? So this shloka is talking about coming back. पिछले श्लोका never coming back, no coming back, coming back. निवर्तते, तो न निवर्तते. और Krishna is telling यद गत्वा न निवर्तन्ते. You are talking of the topmost planet now. ये सब conditions की भी जरूरत नहीं है. Krishna conscious person. यद गत्वा न निवर्तन्ते. So when we achieve that planet, Goloka, Vrindavana, achieve Krishna, attain the Supreme, and there's no coming back into this material world at all. So the mystic who passes away from this world, the yogi जो मृत्यु का शिकार हो जाता है ऐसे समय में, कौन से समय? During the smoke, धूमो, रात्रि ही, the night, the moonlight fortnight, तो तथा कृष्ण मतलब the waning moon. Then or in the 6 months when the sun passes to the south, दक्षिणायनम षण्मासा. तो चतुर्मास्या से प्रारंभ होता है ये दक्षिणायना लगभग. So all the devatas go to sleep. Lord Vishnu also goes to his yoga nidra, sleep. So during this time when somebody gives up his body, for a yogi we are talking of, then nivartate, or he can, or who reaches the moon planet again comes back. तो कुछ करके चंद्रलोक भी प्राप्त हो जाएगा. तो लोग अभी प्रयत्न कर रहे हैं चंद्रलोक में जाने के लिए. इतना
जा चुके हैं, आ चुके हैं और वहां पे बसना भी चाहते हैं, मार्स में बसना चाहते हैं, लेकिन क्या लिखा है इसमें, कम्स बैक योगी प्राप्य निवर्तति। चंद्रलोक में भी, जो स्वर्ग लोक है, चंद्रलोक इज अ पार्ट ऑफ स्वर्ग लोक, चंद्र इज अ हेवनली डेनिजन, तो दैट बिलोंग्स टू दैट लोक। तो वहां पे भी कोई जाएगा वापस तो आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, विच इज द नेबर, भूर भुवा स्व, so it's just a neighbor. We're talking of topmost planet in the material world, ब्रह्मलोका। तो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, they have to come back. Only Brahma can escape. If he is in the process of following his duties, has become pure devotee of Krishna, then he will get an entry into spiritual world. Otherwise, even Brahma has to come back to the earthly planets and go through all this chakra, samsara chakra, samsmriti. So in the third canto of Srimad Bhagavatam, तीसरे स्कंद भागवतम में, we're informed that those who are expert in fruitive activities and sacrificial methods on earth attain to the moon at death. तो चंद्रलोक कैसे कोई पहुंच जाएगा, जब वो अपना कर्म को बहुत अच्छी तरह निभाएगा, एंड जो यज्ञ याग को बहुत ही सुसंस्कृत तरीके से करेगा, वेरी परफेक्ट यज्ञ इज डूइंग एंड वेरी गुड इन इस कर्म, वेरी गुड इन इस एक्टिविटीज। अच्छे कर्म करो, लोग बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करना है, बस अच्छे कर्म करेंगे तो बस यही होगा, चंद्रलोक मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, बस, और उससे कुछ और ज्यादा नहीं होगा। बट दैट इज बेटर देन not doing, I mean, doing harm to others, no doubt about it. But it is only keeping us back in the material world. These elevated souls live on the moon for about 10,000 years. स्वर्गलोक है, 10,000 साल का आयु है। यहाँ पे कलयुग में हमारा आयु है 100 साल, मुश्किल से गिन चुन के, गिने चुने लोग ही उतना जी पाएंगे। चंद्रलोक में क्या है, देवलोक है, 10,000 साल। बट डेमीगॉड कैलकुलेशंस, उनके एक साल, हमारे एक साल 6 महीने उनका दिन है और 6 महीने उनका रात है। तो जब हमारा एक साल होता है, उनका एक दिन होता है। ऐसे 10,000 साल वो जीते हैं, मतलब हंसी खुशी जीते हैं, लेकिन वापस आना पड़ेगा। निवर्तते, दे एंजॉय लाइफ बाय ड्रिंकिंग सोमरसा। मतलब जहां भौतिक जगत में, इन द अर्थली प्लैनेट, इट्स लाइक समबडी गोइंग एबल टू गो टू द बार और पब एवरी डे एंड कम। So, okay, that facility is there for many people in this material world, also in this earthly planet also. But that's not going to solve his problem. Janma, Mrityu, Jara, Vadi, Vyadi, Dukkha, Doshanu, Darshanam. These are the four principal miseries of our life. That's what Prabhupada says. और उससे मुक्ति नहीं मिल रहा है, क्योंकि चंद्रलोक भी जाएंगे, स्वर्गलोक भी जाएंगे, जन्म मृत्यु में जूझना ही पड़ेगा। जरा व्याधि तो उनको आता नहीं है, क्योंकि सोम रस पीते हैं, अमृत पी चुके हैं। उनका लास्ट ईयर, उस साल में उनको थोड़ा जरा अवस्था, थोड़ा तंदुरुस्ती खराब होना, ऐसे महसूस उनको होता है। और उनका एंजॉयमेंट इतना होता है, उनके बच्चे भी नहीं होते हैं। बच्चे होंगे तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो उनके बच्चे कब होंगे, लास्ट ईयर में। अगर बच्चा होना है, they have to have children. The heavenly denizens will get children in their last year. Out of the 10,000 years, the last year they will get it, and in that period they can enjoy the company of their son, daughter, or whoever it is. This facility is given because without any worry they can enjoy. कोई भी चिंता ना करना है, ना परिवार बढ़ेगा, ना बच्चे पैदा होंगे, बस एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। सो दे इवेंचुअली रिटर्न टू अर्थ, लेकिन वापस भूमि में आना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट ऑन द मून देयर आर हायर क्लासेस ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो अच्छी फैसिलिटी मिलता है चंद्रलोक में, मतलब दे मस्ट बी वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल, हायर क्वालिटी पीपल।
though they may not be perceived by the gross senses. लेकिन ऐसे शायद नहीं लगता है कि they are very elevated, लेकिन सच्चाई यही है कि they are all elevated souls. So let's move on to the next shloka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare. Shloka number 26. Shukla Krishne Gatiyete Jagata Shashvate Mate Ekaya Yati Anavrittim Anyaya Vartate Punaha. So what is this shloka talking about? Now the two ways of passing away again is being reiterated. So we will read shloka number 27 also. First is one way and the second way. Naitishruti Parthajanam Yogi Muhyati Kaschana Tasmat Sarveshu Kaleshu Yoga Yukto Bhavarjuna. So now Krishna, what is he telling in shloka number 26? According to the Vedas, there are two ways of passing from this world. Shukla Krishne Gatihi Yete. So there are two ways of passing away from this world. One in light and one in darkness. Shukla Krishna. Light, dark. Gatihi Yete. So somebody may attain his destination in one of these periods. When one passes in the light, तो क्या होता है? He does not come back. एकया याति अनावृतिम. एक पथ में वापस तो नहीं आना पड़ेगा. But when one passes in darkness, he returns. अन्यया आवर्तते पुनः. और दूसरे एक ऐसा पथ है, कृष्ण पथ, जहां पे वापिस आना पड़ेगा. लेकिन हमारा पथ कृष्णा पथ है, राधा कृष्णा पथ है, तो हमें वापस नहीं आना पड़ेगा. गोलोक में हम सेवा में व्यस्त हो जाएंगे. It is the destination of a Krishna devotee. So the same description of departure and return is quoted by Acharya Baladev Vidya Bhushan from Chandogya Upanishad. यही श्लोक का वो वर्णन करते हैं. In such a way that those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial are constantly going and coming. So ये आना जाना, this is the business of the living entity, because it's a marginal energy, marginal potency. कभी इधर कभी उधर होता रहता है. Actually, they do not attain ultimate salvation, for they do not surrender to Krishna. शुक्ल में जाओ, कृष्ण में जाओ, लेकिन एक में वापस नहीं आना पड़ेगा, एक में लंबा आयु मिलेगा. लेकिन if you are not attaining Goloka, then वापस धरती या earthly planets पे आना पड़ेगा भोगने के लिए. So in the next shloka we learned, the devotees who know these two paths, जो भक्त ये दो पथ को जानते हैं, वो अर्जुना, are never bewildered. न योगी मुह्यति कश्चन न ite shruti partha janam yogi muhyati na muhyati. He is never getting bewildered. Yogi will not get bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. Yogi matlab one is in union with the super soul, one who is a devotee of the Lord. Tasmat sarveshu kaleshu. So therefore, always be fixed in devotion. Yoga yukto bhavarjuna. So Krishna is giving the conclusion. Okay, I've given you many ways of passing away, but then if you're a Krishna conscious person, just be Krishna conscious under the guidance of your guru and your preachers and devotees. Tasmat sarveshu kaleshu. Always be Bhavarjuna. Bhavarjuna means just become Arjuna. Just be fixed like this, Arjuna. So Krishna here is advising Arjuna that he should not be disturbed by the different paths of the soul when living the material world. तो इस सब झंझट में पड़ना ही नहीं है. Don't have to fall into this material mire. Just remain Krishna conscious and Guru will take you back to Godhead. So a devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will depart either by arrangement or by accident.
अच्छा गलत समय में गुजर गए तो ये अभी ये सोच के नहीं बैठना है। अभी प्रभु ने 8वें चैप्टर में पढ़ा दिया है कि लाइट नहीं है, जाएंगे जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये सब सोच के नहीं बैठना है, बिकॉज anybody who is chanting Hare Krishna mantra, anybody who is constantly engaged in Krishna conscious activities is always in light. He is there in that light which will never go away. He is enlightened, you can say that. So the best way to be absorbed in Krishna consciousness is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने का? To chant Hare Krishna mantra. The best way is to be absorbed in Krishna consciousness, is to be always dovetailed in his service. हमेशा कृष्ण भावनामृत कार्यों में हमें व्यस्त रहना है. And this will make one's path to spiritual kingdom safe, certain, direct. Direct flight, no stoppage, safe, no turbulence, or certain, 100%. Krishna is telling, Hoga hi, asamshaya, he uses the words many times. So what is that? It's a safe, certain, direct journey to the Lord. Krishna consciousness under the guidance of a bona fide Acharya. And we are all very fortunate to have Srila Prabhupada as our Acharya, who is a pure devotee. So the word Yoga Yukta is certainly significant in this verse, to be situated in yoga. One who is informed in yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activities. Matlab, yoga yukta means to be always fixed in Krishna conscious activities. Sri Rupa Goswami advises that one should be unattached to the material world and that all affairs should be steeped in Krishna consciousness. तो भौतिक वस्तुओं में, भौतिक विषयों में आसक्ति नहीं बनाना है, कृष्ण भावनामृत में प्रयत्न करना है और कृष्ण नाम रुचि की तरफ हमें बढ़ना है. अच्छा, ये रुचि हम पा सकते हैं by sadhana? Yes, by sadhana also we can get ruchi. So we must always be a good sadhaka. Therefore, the devotee is not disturbed by these descriptions because he knows that his passage to the Supreme Abode is guaranteed by devotional service. Prabhupada, Krishna again and again are telling guaranteed, guaranteed, it's insured, it is assured. कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. We are all on the right path. पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं. Just Prabhupada says, hold on to my dhoti. मेरे धोती को पकड़ के आ जाओ, मेरे पास गोलोक वृंदावन के लिए बैक डोर एंट्री है. क्यों? जानते हैं हम सब नालायक हैं, फ्रंट डोर एंट्री तो मिलने वाला नहीं है. तो उनके पास बैक एंट्री का की है, जाना तो अंदर ही है, चाहे फ्रंट डोर से जाए, बैक डोर से जाए, गुरु का धोती पकड़ के जाए गोलोक वृंदावन. दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड. सो विल मूव अहेड एंड डू श्लोका नंबर 28 also, which is incidentally the last verse in this chapter. We'll try to finish this. So now it's a very interesting thing, this shloka. Why it is interesting, I will tell you. Previous shloka we learned about the path to spiritual kingdom is safe, it is certain, it is direct. हम सब चाहते हैं ना, जब भी फ्लाइट बुक करते हैं तो हम डायरेक्ट फ्लाइट चाहते हैं, कहीं पे स्टॉप ओवर्स नहीं चाहते हैं, सेफ फ्लाइट चाहते हैं. We see the safety record. Certainly चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बुक कर दिया और कैंसिल हो गया. We want such airlines which gives me these things. So here is an airline. It's called as Bhakti airline. तो इस एयरलाइन में, इस एयरक्राफ्ट में हम बैठे हैं तो हम अपना डेस्टिनेशन सेफ, डायरेक्ट एंड अश्योर्ड इट इज गोइंग टू हैपन. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. So if you notice, this shloka I chanted in a different meter because there are many words in this. It is not like the 3 words, 1 line. That was a different meter. तो ये जो श्लोक मैंने अभी उच्चारण किया,
the Chandamsi is changed, so the meter changes. So a person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from study of Vedas. तो जो भक्ति पथ में है तो लोग सोचेंगे अरे ये तो दान नहीं कर रहा है, पुण्य नहीं कमा रहा है, ये तो विद्याभ्यास नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक विद्याभ्यास नहीं कर रहा है, ये वेद और शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, मतलब पारंगत नहीं हो रहा है और कुछ ऐसे कार्य नहीं कर रहा है जिससे पुण्य मिल रहा है, तो ये कैसे उद्धार होगा? तो योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम. So you remember this, all these things are achieved for a person who is in devotional service. He is achieving more than that. The results of whatever we get by practicing these things, studying the Vedas, Vedeshu, Veda Paran karne se, performing austere sacrifices, Yajneshu tapashu, घोर तपस्या करके भी, derived from then giving charity or pursuing philosophical fruitive activities, दानेषु पुण्य फल प्रतिष्ठम. तो ऐसे कार्य में निरस्त होना, मतलब ऐसे कार्य में व्यस्त होना जो फल देगा, ये सारे फल भक्त को ऑलरेडी मिल चुका है. Then at the end he reaches the supreme abode. उससे over and above that परम स्थानम उपैति च आद्यम. तो ये सब भोगने के बाद वो वापस भगवत धाम आएगा. लेकिन जो केवल पुण्य कार्य कर रहा है, पुण्य शिने पुण्य मर्त्य लोक विशंति, तो उसको वापस मर्त्य लोक आना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी हो. लेकिन परम स्थानम जो कृष्ण भगवान को पालेगा, देन अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, ओवर एंड अबव ऑल दिस इज गोइंग टू गेट कृष्णा आल्सो, कृष्ण लोका आल्सो. One has to study. So this, why I said it's interesting was, this is a summary of chapter 7, chapter 8. Each shloka, 8.28, last shloka of chapter 8 is a summary of chapter 7 and chapter 8. एक श्लोका में दो chapter का summary आ गया. So this verse is a summation of 7th and 8th chapters. One has to study the Vedas under the guidance of spiritual master, undergo many austerities and penances, by living under the care of spiritual master. A brahmachari has to live in the home of a spiritual master just like a servant. तो ये सब austerity तो एक शिष्य automatically ले रहा है. And this is a transcendental austerity, not a material austerity. So this is the beauty of Krishna consciousness. We'll get everything and then Krishna also. And over and above, we are getting Krishna, not and then. Over and above, we are getting Krishna also. जो पते की बात है. He takes food only under the master's order. ये भी एक तपस्या है. Vedic principles for observing brahmacharya he follows. तो वेद ज्ञान तो है इसमें, because practically he is doing it. Vedas under the master for a period of from 5 to 25 years. तो वेद अध्ययन करना है तो 5 से 25 के आयु में गुरुकुल में रह के गुरु के आदेश के अनुसार विद्याभ्यास करना है. He will become a man of perfect character. इसके बाद गुणवत्ता उसका इतना होगा कि वो एक अच्छा इंसान कहलाएगा. But for a Krishna conscious person, he's already got all the qualities of a devata. Study of the Vedas is not meant for recreation, armchair speculators. वेद ज्ञान, वेद पारण या वेद का पढ़ना एक रिक्रिएटरी काम नहीं है. But for the formation of character, चरित्र को बनाने के लिए हमें वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए. So a householder, he also has to perform many sacrifices and strive for further enlightenment. तो गृहस्थ भी हो तो उसे ये सब तपस्या करना है. Vanaprastha also undergoes severe penances. Sannyasi also undergoes severe penances. Then he becomes elevated to the perfectional stage. So varnashrama dharma में ये provision है. So then they are elevated to heavenly kingdoms. Perfection, then they may get heavenly kingdom. Sannyasa without Krishna will give us that. So they are liberated in the spiritual sky, either in impersonal Brahma Jyoti or Vaikuntha planets of Krishna Loka, and this path is outlined by Vedic literatures. तो वेद में
divisions are given and recommendations are given on how certain things, when we do certain things, we will achieve. So the beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all rituals of the different orders of life. तो वर्ण आश्रम आचरता, तो कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है, he is already getting all the good results of following varna ashram. Then one should try to study the 7th and 8th chapters of Gita not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with pure devotees. तो यहाँ पे कौन से pure devotees है आप सुन रहे हैं? It's not Janak Das. It is Srila Prabhupada. When we read Srila Prabhupada's book, I'm only the mouthpiece. But actually we're sitting with Srila Prabhupada. Srila Prabhupada हमें association दे रहे हैं. So it's only I'm being the voice of voice to read. Prabhupada had this habit, he would make his disciple read. You read and others would hear. So like that arrangement is being made. But who is giving us the association? It is Srila Prabhupada. So his life at once becomes glorified beyond all penances, sacrifices, charities, speculations. Ye daan nahi kiya, ye punya nahi kiya. No chinta, no need to worry. Because we are in the right track. We are in that track where we will never come back. Where we will go to the ultimate destination, the desired destination. So one should hear the Gita from devotee because at the beginning of 4th chapter it is stated, Gita can only be perfectly understood by devotees. गीता कौन समझ सकता है? केवल एक भक्त समझ सकता है, एक विद्वान नहीं समझ सकता. विद्वान भगवत गीता श्लोका को कंठस्थ जानता है, लेकिन हृदयस्थ नहीं जानता. हृदयस्थ कौन जानेगा? केवल भक्त जानेगा. और हृदयस्थ मतलब he will accept everything as true. He will not doubt anything that Lord Krishna has told, and he will act accordingly. There are many people who know all 700 shlokas, but they don't follow many things. What is the use of it? It's like having money in the bank and not utilizing it and allowing it to rot. So we are all fortunate that we get to hear Gita from a pure devotee, from his Bhagavad Gita as it is. And hearing the Gita from devotees, not from mental speculator, is called faith. तो श्रद्धा, आधव श्रद्धा, भक्ति के पथ में पहला सीढ़ी है श्रद्धा. श्रद्धा is what? Hearing from devotee. That is श्रद्धा. Having ruchi to hear from a devotee. That means that faith is there. That if I hear to this devotee, then I will get Krishna. So ये starting point है. So through association of devotees, one is placed in devotional service. तो आधव श्रद्धा तथा साधु संगा. तो इसलिए साधु संग होता है. अथा भजन क्रिया. साधु क्या करेगा? आपको बोलेगा चैंटिंग करो, हियरिंग करो, रीडिंग करो, मंदिर आओ. तो इस भजन क्रिया आपको भजन में इन्वॉल्व कर रहा है. उससे क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, सारे जो मैल है धुल जाता है. So Krishna's activities, form, pastimes, name become clear and all misgivings are dispelled. सारे कल्मश मिट जाएगा केवल कृष्ण का ध्यान करने से, ज्ञान पाने से और नाम जपा करने से. When doubts are removed, the study of Gita becomes extremely pleasurable. फिर गीता अध्ययन एक सुसुखम कर्तुम अव्ययम. In reality, it becomes a very pleasant task. Devotional service becomes very pleasant. Therefore, it is said susukam kartum avyayam. A person can endlessly do devotional service because he will enjoy it in the real sense. So in advanced stage, one falls completely in love with Krishna. तो जाते जाते कृष्ण प्रेम वो पाएगा. So and prepares the devotees transfer to Krishna's abode. इससे वो वापस कृष्ण धाम चला जाएगा, वापस इस मर्त्य लोक में नहीं आएगा. So thank you very much for joining me today. We managed to finish chapter 8. In the next session, I'll be doing